Good morning, students. How are you? I hope you all are very fit and fine. So, students, we are doing your English work, and in English, we are learning different vowel sounds. So, we are learning A sounds. So, before that, we have learned about AT sound that make at, an, as, at. So, today we will see the next sound, that is am, am. A says a, M says म. So am क्या बन रहा है ये am. So उससे रिलेटेड हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे. So you can see here, what is this? This is D. D. So D says d. D says d. A म और am बन रहा है ये, तो इसको हमें ध्यान है. A am am. So d am damn. D am damn. J says j. J says j. So j am jam. J am jam. Y says y. Y says y. Am yam. Y am yam. So let's start to write these words. So let's start with me. So you can make D words how you learned. Am, damn. Right again. So D, do it with sharpen pencil. A, am. So ये जो है, ये बीच वाले जो ब्लू लाइन्स है, इसके अंदर अंदर ही करना है, बाहर नहीं निकालना है. राइट. Am, damn. Next is G, A, am, jam. Again, like this. Bring it up. Make A with the line, then am, and leave it. And this one, jam. Next one is yam. So here is your Y, then bring it up, then make A, then join the am with A and leave it. So what is this? This is yam. Again, Y, A, am, yam. Try it with me again. So here is D, A, then am, J, A, am, jam. Then Y, A, am, yam. Okay, so how's are all the words? So आपको और साउंड और कुछ वर्ड्स आते हैं एम से बनने वाले, वो भी आप साथ में कर सकते हैं. और इन तीनों वर्ड्स को तो आपको पूरे पेज पे करना ही है. उसके साथ में ही बाकी पीछे की जो चीज़ें हैं उसको भी रिपीट करते हुए चलेंगे, लाइक एट साउंड्स, एम साउंड्स, एज साउंड, एंड साउंड से जो रिलेटेड वर्ड्स थे उनको भी साथ साथ में लर्न करेंगे. ओके, बोलते रहा करो, स्पेलिंग्स बोलते रहा करो, अपने आप लर्न हो जाएगी धीरे धीरे. ओके, सो इसका कंप्लीट पेज अपनी आप नोटबुक में करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.